Hello friends, welcome to Pro Talent, and this is our legal news for CLAT January 2019 module number 2. I'm sure you must have watched our module number 1 wherein we discussed about, you can say, some around 4 important legal issues. The students who are sincere and serious about legal profession are the students who put a lot of efforts in terms of understanding the world around them. And one of the way to build around it is basically knowing about the legal news. Here, ProTalent comes to your rescue, where ProTalent provides you such wonderful legal news. Make sure students should really go through this entire video. Try to learn all small things and use it for your exam. Moving further, let's talk about issue number 5. Here, we talk about vote on account. Let me discuss one important point here. I'm sure you are aware there is a word called budget. Then there is a word called interim budget. Okay. And then there is a word called vote on account. Okay. Okay. This is what we have, like budget, interim budget and vote on account. I'm sure you understand what is budget. बजट इज साल भर का एक कंट्री का पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग. ओके, दिस इज बेसिकली अ बजट. ओके, नाउ इन इंडिया budget is generally presented in India. Budget was generally presented on the last day of February. अब होता यह था that budget is to be presented in front of parliament. फिर उसका डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, and then it has to be passed in लोकसभा. ओके, सो लोकसभा में पास होने में उसको एक समय लगता है. ओके, बिकॉज हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से चल जाता है. ठीक है, अ मंथ, दैट इज अ मार्च मंथ फॉर डिस्कशन मे बी लिटिल लेस फॉर एनी बजट. ओके, सो देयर बाय समटाइम्स passing of budget may even take April. Okay, and therefore government has to come with something called vote on account. Now what is vote on account? Vote on account is not a budget. It is basically a temporary money to be withdrawn by the current government to run the show. Okay, that means vote on account is only talking about expenses. Okay, it is not talking about any other thing, while budget, okay, is about revenue and expenses both. Okay, now vote on account is for temporary period. Okay, अब जैसे इस बार इलेक्शन होने वाला था करीबन यू कैन से अप्रैल के महीने में, तो उसके लिए नई सरकार आएगी करीबन यू कैन से मई के महीने से. जब नई सरकार आएगी तो वो साल भर का बजट रखेगी, एंड देयरफॉर इट वाज एक्सपेक्टेड that government, that is the current government, will bring, you can say, vote on account or maximum interim budget. It will not bring full-fledged budget. It was such kind of expectation, but the current government made sure that it presented full budget. Okay, now this full budget is really a problem. Okay, क्या problem है? Because it is violative of the general conventions which are happening. Okay, so therefore this vote on account या interim budget उनको डालना चाहिए था. Sir, what is interim budget? Interim budget is a budget for a temporary period. Okay, करीबन 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, because government will possibly, you can say, change, and therefore they do not want to change lot of policy matters, and therefore they bring interim budget. हमारी इस current government ने full budget लेकर आए, and therefore there are a lot of opposition. So opposition says that parliamentary convention prohibits a government from taking major policy or legal change through vote on account. ठीक है, especially when it is a last parliament session, and therefore they wanted to bring big changes. Okay, क्या changes लेकर आए? पीएम किसान, आपको याद होगा तो, yes or no, then 6,000 rupees for, you can say, किसान. ठीक है, every year 6,000 रुपया मिलेगा, 2,000 रुपया 3 सीजन्स में मिलेंगे. So all those बड़े बड़े changes cannot be brought
through vote on account, and therefore they introduced a concept of budget. Okay, so I hope this is very clear. Let's take some background of this issue. 1948 में फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय पे आर के शानमुखम शेट्टी. ही प्रेजेंटेड अ वोट ऑन अकाउंट and followed by it became a kind of norm or convention in our country. In fact, this current government changed the presentation date of, you can say, budget. Earlier it was 28th of February. It shifted to 1st of February so that enough discussion का time मिल जाए and therefore vote on account की जरूरत ना पड़े. So this is how they did it and it was good idea. But there are, you can say, few issues. There are no proper rules about, you can say, government cannot amend a particular thing or not. उसके बारे में कुछ बोला नहीं है. और जब थोड़ा सा समय कम रहता है तो हर गवर्नमेंट ये करती है कि बड़े बड़े चेंजेस नहीं लाते हैं, but this government modified this. Okay, so this is the major issue happening with respect to vote on account. I'm sure the students like you who understand this vote on account will have a benefit in the exam. Yes, great. आगे बढ़ते हैं and talk about All India Judicial Services. If you remember, I've been discussing about this issue called All India Judicial Services. ठीक है. Recently, Niti Aayog presented a document called Strategy for New India at 75. Okay, this was a kind of, you can say, document presented. In that document, there was a need of the hour that should create All India Judicial Services. Okay, so the idea of this particular service was introduced in first law commission. जब सबसे पहला लॉ कमीशन बना था, ठीक है, तो यहां से बिल्कुल सवाल पैदा होता है अभी कौन सा लॉ कमीशन चल रहा है एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस लॉ कमीशन. फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए. नंबर 2, also tell me when was the first law commission established and who was the first law commission chairman. Okay, so even in the first law commission this was presented. Okay, what are the reasons, what are the rationales for creating this AIJS? Number 1, incentivizing the judges. Generally this, you can say, court judges, which is subordinate judges जो होते हैं, उनकी salary is quite less than the government bureaucrats. So primarily putting them into this service will raise their, you can say packages that will give them a lot of benefit. That's an incentivizing. Quality will get improved and shortage of, you can say, judges will be reduced. These are the kind of rationales being provided. Few more reasons. It will streamline the procedure for the recruitment. Constitutionally, it is permissible as well. Okay, so there should not be any question about constitutionality of this. Remember, to create any All India service, who has a final authority? Final authority lies with the Rajya Sabha. Now, why Rajya Sabha? Because Rajya Sabha is a representative of states. Okay, so India being a quasi-federal state, we are a quasi-federal country. ठीक है, राज्य सभा is basically a position where states can represent themselves. तो स्टेट से अप्रूवल अगर मिल जाए तो ऑटोमेटिकली ऑल इंडिया सर्विस लगा सकते हैं. सो आर्टिकल नंबर 312 के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स राज्यसभा टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस, and there are a lot of efficiency and efficacy related aspects will be taken care of when we develop this AIJS. Now, there are challenges which are coming. What are the challenges? Number 1, it says the shortage of judges will still remain. Why it will still remain? Because AIJS is obviously not a magical remedy that once we put in and people will automatically, you can say, come in large number and possibly we will be in a position to appoint them. ऐसा होने की संभावना थोड़ी सी कम है. Then there are people who are opposing this issue. Who opposes this? Let's understand this. India being a quasi-federal state, that means as if we are फेडरल स्टेट है हमारा. उस फेडरल स्टेट के अंदर एक प्रॉब्लम ये होता है कि स्टेट्स चाहते हैं कि उनकी बातों को से माना जाए. ओके, एंड दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये बहुत जरूरी है. और जब AIJS लेकर आते हैं तो बहुत सारे स्टेट उस बात के लिए रेडी नहीं है. जब वो रेडी नहीं है तो AIJS तो आ ही नहीं सकता. That's a very simple thing. ठीक है, उनको क्यों क्या प्रॉब्लम आता है? Because they feel that this law and order
is basically states domain. ठीक है, उनका मानना है लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट्स डोमेन. ठीक है, while center appointing such kind of judges, ठीक है, will be encroaching upon states power. Okay, there is also an issue of independence of judiciary which is coming into picture, and there are a lot of other issues like language, customs and law of states. ठीक है, ये सब मुद्दे इसमें बाहर निकलते हैं और उन मुद्दों के द्वारा अगर कोई बाहर का बंदा, फॉर एग्जांपल कर्नाटका गाय may not be in a position to fit into basically an issue connected to Haryana, and therefore there are challenges which are coming. But overall the conclusion says that despite the limitation, it is a need of the hour that we bring this AIJS. If we are bringing this AIJS, possibly it will sort out a lot of challenges which we are facing in our country. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट नंबर 7. अभी जो हमने बात करी AIJS, ठीक है, वो तो AIJS की सर्विस लेकर आनी है. तो अभी जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है? जजेस की अपॉइंटमेंट होती है ना, एक तरीके से कोई जुडिशियल सर्विस की एग्जाम होती है, या मैजिस्ट्रेट जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होते हैं उनको एग्जाम देकर पास करके वो आगे बढ़ते हैं. दिस इज व्हाट द अपॉइंटमेंट इज. एंड आफ्टर दैट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे अपॉइंटमेंट होती है? इट इज कमिंग थ्रू कॉलेजियम सिस्टम. किसके द्वारा होता है? कॉलेजियम सिस्टम. सो दिस इज एन इश्यू अबाउट कॉलेजियम सिस्टम, जहां पे एक कंट्रोवर्सी अरोज हुई थी जब जनवरी 10 को एक रिजोल्यूशन पास हुआ जिसमें 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को एलिवेशन के लिए पिक किया था, मतलब उनको एक पर्टिकुलर हायर लेवल पे ले जाना था सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए, पर उनका नाम ड्रॉप हो गया, 2 नए लोग आ गए. एंड उसके अंदर ऑल द मोर द प्रॉब्लम वाज जस्टिस संजीव खन्ना वाज मेड सुप्रीम कोर्ट जज, सप्रेसिंग सम अराउंड 32 अदर जजेस हु वर सीनियर टू हिम. उनसे जो सीनियर थे उनको हटाकर इनको ऊपर बिठाया, एंड दैट्स व्हाई देयर वाज अ कंट्रोवर्सी गॉट क्रिएटेड इन दिस कॉलेजियम सिस्टम. व्हाट इज अ कंट्रोवर्सी? कंट्रोवर्सी इज द कॉलेजियम सिस्टम इज वेरी opaque. That means it is not transparent. People like you and me who would like to know why this person and not that person has been upgraded, nobody knows. It's so much of opaque system. Also, there is an issue of nepotism. I'm sure you have heard about nepotism. Bollywood में कंगना रनौत talks about a lot about nepotism. Nepotism का मतलब होता है अपने ही बेटे को, अपने ही नेफ्यू को, नीस को आगे बढ़ाना. ठीक है, that's called nepotism. और कंगना रनौत in a right manner she is opposing this part in Bollywood. Yes, ठीक है. तो ये nepotism की बात सुप्रीम कोर्ट मतलब कॉलेजियम सिस्टम में भी लगती है. ठीक है, जज का बेटा जज. ओके, पॉसिबल. ओके, ठीक है. लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इज ऑल्सो अनदर इश्यू. We don't know why Sanjeev Khanna was elevated. ठीक है, so those kind of objective criteria are not known, and there is independence of judiciary is definitely a sort of controversy it is creating, because Supreme Court wants to remain independent, and thereby when government wants to enter into their, you can say, decision making, it stops it. Okay, so एक तरीके से बड़ा इशू क्रिएट होता है यहाँ पे. वायलेशन ऑफ सीनियरिटी प्रिंसिपल, अभी हमने केस देखा संजीव खन्ना साहब का. लैक ऑफ जस्टिफिकेशन, कोई तरीके का प्रीवियस अपॉइंटमेंट जो करी गई है या फ्यूचर में करी जाती है उसके बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं होता है. एंड देयर इज अ लैक ऑफ रिफॉर्मेटिव स्टेप. ठीक है, कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा है. एनजेएससी लाने की कोशिश करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएससी को खारिज कर दिया. इसलिए किया बिकॉज वहां पे एग्जीक्यूटिव अपना कंट्रोल लेकर आना चाहता था, पर अब एनजेएससी तो निकल गया, कॉलेजियम सिस्टम चल रहा है. सो फाइनल एनालिसिस सेज दैट lack of written manual, lack of selection criteria, arbitrary reversal of or the decisions earlier taken, and selective publication of records of meeting, all this point to the fact that collegium system is, you can say, not only opaque but it is also becoming very bad. हालत काफी खराब हो गई है, and therefore it is a time to revisit this collegium issue. Okay, and therefore government and Supreme Court should sit together and try to find out some solution to this. Okay, coming to issue number 8, possible end of oral mentioning in Supreme Court. Now what is this oral
मेंशनिंग। ओरल मेंशनिंग सुप्रीम कोर्ट में होता था जब कोई केस सुप्रीम कोर्ट में है और लॉयर को लगता है कि दिस इज एन अर्जेंट केस, उसको जल्द से जल्द उसको डेट देनी चाहिए, तो उनको जाना पड़ता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने। Remember, Chief Justice of India is a master of roster. Yes or no? He is the administrative head of Supreme Court. तो उनके पास जाना पड़ता था, उनको ओरल मेंशनिंग देनी पड़ती थी कि आई रिक्वेस्ट मिस्टर CJI, या तो कभी कभार बोलना पड़ता था आई रिक्वेस्ट माई लॉर्ड दैट दिस केस हैज टू बी टेकन। ओके, और ये कभी कभार फोर्सफुली लॉर्ड बोलना पड़ता है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में अब ये बात खत्म हो जाने वाली है। सुप्रीम कोर्ट इज डेवलपिंग अ न्यू मेथड, जिस मेथड के अंदर ऐसे ओरल मेंशनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, सो दिस इज व्हाट द करंट सिनेरियो व्हिच इज कमिंग। सो व्हाट विल द बेनिफिट? द बेनिफिट वुड बी इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम. Okay, because then you are unnecessarily not wasting time of Supreme Court. Impact on various other cases, ये बिल्कुल फायदेमंद होगा because CJI on the spot is taking a call, और इन सब में कभी कभार बहुत ही लर्नेड काउंसिल है या बहुत ही ज्यादा पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लॉयर है, वो ऐसे केसेस में बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर लेता है, और कभी कभार अर्जेंट केस नहीं होता है तो भी उसको अर्जेंट बनाकर प्रेजेंट कर देते हैं, एंड दिस विल गिव अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन. ओके, सो दिस इज अ गुड थिंग व्हिच इज कमिंग इन आवर कंट्री. कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट कॉल्ड इश्यू नंबर 9, प्रोप्राइटी ऑफ न्यू आंध्रा हाई कोर्ट. आंध्र प्रदेश का जो नया हाई कोर्ट है ना, वो सही तरीके से उसको नहीं बनाया गया. ठीक है, और ये हमारे जस्टिस जे चिलमेश्वर साहब ने इसके बारे में क्वेश्चन किया दैट the parliament approval has not been taken and it is only through presidential order it has been done, and this is a bad idea. Okay, because ऐसा कन्वेंशन तोड़ देना सही बात नहीं है. गैजेट ऑफ इंडिया दिसंबर 26 के मुताबिक इन्होंने ये आंध्र हाई कोर्ट लगा दिया. दे बाईपास पार्लियामेंट, है ना, उनको जो प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए पार्लियामेंट का वो उन्होंने लिया नहीं है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ problem. Moving further to talk about issue number 10 called National Voters Day. Remember the date, that is you can say January 25th, क्योंकि उस दिन भारत का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एस्टैब्लिश हुआ था, और भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे मिस्टर सुकुमार सेन. याद रखिएगा उनका नाम. नेशनल वोटर्स डे करीबन 9 सालों से ये मना रहे हैं, 2011 से मना रहे हैं. दिस विल बी 9th ईयर. ओके, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा. नेशनल वोटर्स डे का बेसिकली पर्पस है टू एनकरेज एंड फैसिलिटेट एंड मैक्सिमाइज द एनरोलमेंट ऑफ न्यू voters. Okay, and this year they developed a quarterly magazine called My Vote Matters, and that the first copy of it was presented to the president. Okay, chaliye, great. So these are the few issues which I discussed here. Do not miss out to take further issues in the module number 3. I will bring module number 3 of legal news of January month. Okay, thank you very much and all the best. Do not miss out to take this PDF from protalentdigital.com. Thank you very much. All the best.